Sir, Cuttack Debate Club founded in 1868, which promoted the critical thinking and intellectualism, and which provided provided a forum for open and honest debate. Okay. I think how kon movement अच्छे Sir, Mohima Dharma. ओके महिमा धर्म हाँ सत्य महिमा धर्म और कौन Sir, I want to Christian add missionary a महिमा value. धर्म भूदान मूवमेंट ओके और कौन सर चैतन्य फेथ इन ओडिशा ओके दलित मूवमेंट ओके चैतन्य महाप्रभु हाँ missionaries, हाँ क्रिश्चियन मिशनरीज कहले ना क्रिश्चियन मिशनरीज तो भूदान मूवमेंट महिमा धर्म क्रिश्चियन मिशनरी आउट है ब्रह्म मूवमेंट हमारा दलित मूवमेंट है हमारा जंती ओम जो कहले हमारा मेरिया मेरिया sir, Brahmo movement. ओके तो तेणु तुमरा जो मूवमेंट तमे ताकू एक्सप्लेन करके कहि परिबो जे कोन कोन तुमरा मूवमेंट गुडा को जेंति कि सपोज महिमा धर्म हम ऑलरेडी कहि दै छै अगेंस्ट सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होतलो सोसाइटी रे प्रमोट हमर इक्विटेरियन जो इक्वालिटी एमान गबिते अगेंस्ट आइडियलशिप थिला तो डेफिनेटली जेंति कि हमरा तमे भाबिबो जे सेंटर जेंति हमरा माने नेशनल लेवल जेंति कि हमरा वुमेन एजुकेशन पई किछि हे छै कि ओके वुमेन मानकर जेंति विडो मैरिज पई हमरा किछि जेंति कि हमरा सेठी से हेइथिला तो सेही भलिया किछि हे छै कि ओके एंड तमे ओडिसा रे तमे हमें आर्य समाज आ ब्रह्म समाज हमें ब्रह्म मूवमेंट हम ओडिसा रे कथा हम लिखि परिबे ना लिखि परिबे नि Yes, sir, we Yes, sir, can. लिखि परिबा Utkal Brahmo Samaj in 1869 by Hornath Bhattacharya, a follower of Keshub Chandra Sen. ओके तो तमे ब्रह्म मूवमेंट कथा लिखि परिबो ओके अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज कथा लिखि परिबो कि लिटरेसी पई हमरा मूवमेंट पई कथा लिखि परिबो ओके तो जोड़ा तो जानि जे महिमा धर्म ब्रह्म जो मूवमेंट हला कि बुद्धा मूवमेंट हला क्रिश्चियन मिशनरी जेउडा तो लिखिबो आउ एक्स्ट्रा दिन मेरिया कथा माने कहले एक्स्ट्रा आउ कोन कोन एथिरे हे परिबो सर मेरियाटा क्रिश्चियन मिशनरी करथला बरा मेरियाटा हाँ सी अगेंस्ट से माने जो इनिशिएटिव तमरा जो हमें कहले तब क्रिश्चियन मिशनरी तमे लिखि परिबो जदी गोटे दिटा पॉइंट लिखिबो जे माने क्रिश्चियन मिशनरी कोन हेल्थ सेक्टर रे जेमिति कि हमें से माने प्रायोरिटीज होथले एजुकेशन पई तमे सेंट जेवियर स्कूल जोडा का हमें कहले ओके तो सर सत्यवादी बण विद्यालय जोटा करथिले एजुकेशन रिफॉर्म सेटा दे परिबो कि हमें हाँ तमे यूनिवर्सल एजुकेशन पई जो सत्यवादी बकुल बण विद्यालय एजुकेशन पई हमरा रिफॉर्म करा जायतला ओके ना स्क्रीन शेयर करिनी ओके मु स्क्रीन शेयर किछि करिनी जस्ट हमें पॉइंट डिस्कस सर बिरसा मुंडा पर उलगुलान मूवमेंट हाँ मुंडा रिबेलियन पई हमरा मुंडा मूवमेंट जो हमें कहूचे तो सेटा कहि परिबो अच्छा घुमसार मूवमेंट कोन हमें प्रजामंडल मूवमेंट लिखि परिबो ना नहीं ओके तो जेमति कि हमें पढितले गोटे प्रजामंडल मूवमेंट पूरा टोटल प्रजामंडल मूवमेंट भी लिखि परिबो ओके Sir, এটা কোন সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্ট রে ଯିବ প্রজামণ্ডল মুভমেন্ট প্রজামণ্ডল ঘুমসর দেন हाँ तो सीधा प्रजामंडल घुमसर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रे हमें कहबो सोशल इवन इफ तमे जदी एक्सपेक्टेशन जण को करूछ रिलेटेड टू माने तार इकोनॉमिक्स जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होची एंड सोसाइटी इक्वालिटी कथा कह जाउनी तो सेटा भी तमे जस्ट लिखि परियो तम पाखे जदी सफिशिएंट पॉइंट नै तो तमे प्रजामंडल मूवमेंट और घुमसर मूवमेंट भी
एथिरे ऐड करि परिबो किंतु मोर एटा हमरा इकोनॉमिक रिलेटेड जेमति कि एक्सप्लॉयटेशन तुमको करूथिले तो सेति में तमे से मोमेंट कथा तमे लिखि परिबो ओके सर जगन्नाथ कॉल्ड महिमा धर्म ही परिबो कि जगन्नाथ कॉल महिमा धर्म सर सेटा महिमा धर्म तमे कहिछ हमें ओके तो किंतु जगन्नाथ कॉल कथा टिके ओके सर घुमसर हे परिबनी काहे ना घुमसर टा ट्राइबल माने करथिले अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ एरिया जोटा ब्रिटिश करथिले सेपरेशन ऑफ एरिया हम्म तो सेटा घुमसर टा तो हे परिबनी लाग माने सर दोरा विषय चक्र विषय कंदट रहथिले से माने जेतले ब्रिटिश उठी हेतले राजा शिफ्ट को ता अगेंस्ट से माने रिबेल करथिले हम्म तो से ओपन बते okay so let's see कोड गला various social reform movement in Odisha तो एथिरे आई थिंक ए मॉडल आंसर टा मु बनौथली मॉडल कलिंग वार ओके एटा तार येटा मु बनै की देबी ओके तमे जेमति कहिलो ऑलरेडी ब्रह्म मूवमेंट ला महिमा धर्म ला क्रिश्चियन मिशनरीज ला तो तापरे तमे भूदान मूवमेंट कथा कहि परिबो ओके एंड तमे जदि प्रजामंडल मूवमेंट सेटा तमे कटअप डिबेट क्लब सर हां डिबेट क्लब हां एंड तमरा नेक्स्ट होची ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहला तमरा analyze the cause of Kalinga War and its significance उतला क्वेश्चन नंबर 12 Kalinga War and its significance तो कौन Kalinga War रा cause और significance first cause कौन को सर टेरिटोरियल एक्सपांशन थिला हम्म जो हमरो कारुबाकी कर लीजेंडरी अकुटा थिला रिलीजियस फैक्टर सर थिला जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस थिला कमर्शियल कॉज थिला जे तो इंडो एशियन रीजन ने ट्रेड थिला कलिंगर और सर इकोनॉमिकल कॉज भी थिला जे तो मोनोपोलाइज कर देथिले ओवरसीज ट्रेड रे कलिंग सो वेल्थ भी इंक्रीज थिला इनलैंड ट्रेड रे कलिंगर जदि रिलीजियस फैक्टर को सर जीवा जे माने मौर्यन माने शैव डिलाइट्स थिले बेसी सो से माने बुद्धिज्म को गोटे सबक सिखाया पे आस्थिले लेटर किंतु से माने बुद्धिज्म को प्रेज कले ए टाइप रो कज हे परियो सर इंपेरियलिस्ट से माने डिजाइन ऑफ एक्सपेक्ट कलिंग करूथिले जे सर टेरिटोरियल एक्सपेंशन बेले एक्सपेक्ट करूथिले जे जेहेतु तांकर लैंड बाउंड्री टा माने मगध रो लैंड बाउंड्री एसोसिएटेड थिले नॉर्थ वेस्ट एंड साउदर्न सेक्टर रे सो कलिंग काले चोलांक सहित मिसी अटैक करिवो सेही रीजन रु भी से माने जियोपॉलिटिकल एम्बिशन सॉरी टेरिटोरियल एक्सपांशन करथिले जदि जियोपॉलिटिकल एम्बिशन कर देखिबा तेबे कोट ना कोट अशोकंकर इनरिजनेस थिला जे से इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे निजो को प्रूव करिया पई सो से एम्बिशन जोगु से मध्य कलिंग वार को माने कलिंग को अनेक्स करिया पई चाहिथिले ओके आ कोन पॉइंट हबो की कहबो स्ट्रेटेजिक सर लोकेशन कलिंग रूलर मधुमिता को तापरे राजेश मधुमिता को कलिंग रूलर को अशोक लेटर करथिले कि माने ताको रिक्वेस्ट करथिले तांको पाखरे सरेंडर करिया को किंतु कलिंग रूलर जे से मना कर देले सरेंडर करिया पे सेथि पई सी फोर्सफुली अनेक्स करथिले सेटा विषय हेई परिबो कि हेई परिबो ओके माने देखो प्राय जदि देखिबा से माने एरिया जो हमें कहबा जे जीति थिले किंतु इट इज लाइक तांकर ओडे माने तमर थाए ना तमे सबु
माने जिनस अचीवमेंट करी चलीचे गोटे जिनस जेंति कि हमें कहबा जे जो पर्यंत वर्ल्ड कप इंडिया न आनी तमे क्रिकेट जहाँ देले सेटा को किछि माने फरक पड़ेनी सिमिलरली माने मेजर टेरिटरी करथिले किंतु जेंति कि कलिंगटा लागुथिला कि इट इज ए इगोइस्टिक एटीट्यूड रहउछि जे कलिंग को त मो जिति कि रहिबे ओके तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ତାପରେ ବି କଳିଙ୍ଗଟା ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା ତମର ଯୋଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରିଜନ ରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରିବ थ्रू द ट्रेड माने तमरो सी रूट थ्रू तमे ट्रेड करि परिबो ओके तापरे तमे जदी एटा देखिबो जे हां एटा गोटे थ्रेट टू द जो मौर्य डायनास्टी को एटा गोटे थ्रेट हे परिबो जेमि कि वेस्ट ईस्ट किबा साउथ रे हमर रहिला ओके तापरे तमे रिलीजियस फैक्टर देखिबो जेमि कि हमरो मग जो हमरो ए एरिया ता जेमि कि हम कहू छै जे हमरो साइबरजिम ऊपर हमरो थिला किंतु जेहेतु बुद्धिजिम इन कलिंग हमरो बुद्धिजिम इन कलिंग मगध रे हमरो कोन थिला ना जो साइबरजिम थिला एथि हमरो ए रिलीजियस फैक्टर को नै कि जतले तमे जानि छ जे दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द जो अशोकन करडा लाइफ रोटे टर्निंग पॉइंट जोथरे कि से टोटल वार रे नै जो पीस रे बिलीव करिवे तो जो भेरी घोष रु धरि कि धर्म घोष से चेंजेस हेबे आन जोथरे कि टोटल बुद्धिजिम को स्प्रेड करिवे प्रीच करिवे बुद्धिजिम को थ्रू आउट वर्ल्ड रे हमर बुद्धिजिम स्प्रेड करिवे ओके तो ग्लोबल ताको गोटे बुद्धिजिम को गोटे ग्लोबल लेवल रे ताको प्रोपागेट करिवे आर्ट एंड कल्चर रे जदि देखिबो आ पर ही हमर जो कलिंगर हमर आर्ट एंड कल्चर रे जेमति कि बुद्धिस्ट थोड़ी कथा लिखि परिबो तो एई सब गुडा हमर आर्ट एंड कल्चर हला किबा रिलीजियस रे हमर डेवलपमेंट हेतिबो ओके एई सब जिंस गुडा का तमरा सर सिग्निफिकेंस रे हेलो सर हां को सिग्निफिकेंस रे मु गोटे लिखि छि से जते बुद्धिज्म को कन्वर्ट हला पर देवनम प्रियदर्शी बोली निज ना को से रखिथिले 13th रॉकेट जोटा मास्ती अछि कर्नाटक रे से सोर्स लिखि परिबो कि तमे कोठु हमर तमे देखि परिबो इवन जो रॉक एडिट 13 रहला किबा शाहबाजगढ़ जो रे अछि अफगानिस्तान रे भी तमरो तांकर माने डिटेल तमे पाई परिबो ओके तनो कॉज रे तमे देखि परिबो एइथिरे कोन लिखि परिबो जे तमर त कलिंग जोटा वार हेतला अराउंड 261 बीसी रे हेतला कोन पई ना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मौर्य एम्पायर एंड द स्टेट ऑफ कलिंग भितरे जो कॉन्फ्लिक्ट जो बेटा हेतला कोन पई कॉन्फ्लिक्ट तमे पॉलिटिकल कॉज तमे तांकर एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन रहउतला मेन प्राइमरी कॉज होची अशोकर डिजायर फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ओके सी ट्राई करथली साउथ टू बी एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड कलिंग वाज प्रॉस्परस एंड पावरफुल रीजन इन द ईस्टर्न साइड सेति पई सी ट्राई करथली के को कौन करिया पई कनकर करिया पई सेकंड हला कलिंगस रिफ्यूजल टू सबमिट कलिंग आल्सो नॉट विलिंग टू सबमिट टू द मौर्यन पीसफुल जो पीसफुली तो सेति पई गोटे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जेहेतु रहउतला एंड चूज टू फाइट टू डिफेंड देयर इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी तो सेति पई ए जो तांका भीतर इगोइस्ट आसी जे एमाने कहिबे जे हमें केबे हले भी सबमिट करिवनी एमाने एंड तमरा कलिंग जो हमें कहले जो किंग सबमिट न करिया जो तांकर भी इगोइस्ट रहला तो से कॉन्फ्लिक्ट जो से अटैक कले इकोनॉमी कॉज यदि देखिबो कलिंग तो डेफिनेटली गोटे वेल्दी एंड रिसोर्स फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थिला माइंस थिला स्ट्रेटेजिक लोकेशन कोस्टल लोकेशन जेंति हमें कहले बे ऑफ बंगाल रीजन रहिबो तो इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर हे परिबो तो सेति पई एटा टारगेट रहिला मौर्यन एम्पायर तो केमिति अचीव करिया पे पॉलिटिकल राइवलरी भी हम जदि देखिबो मौर्यन एम्पायर एंड कलिंग दैट कंट्रीब्यूटेड टू द वार पॉलिटिकल राइवलरी हमर होछि तो एथिरे हमर कोन जदि सिग्निफिकेंस ऑफ द वार जदि देखिबो तो एटा पूरा लाइफ ऑफ द जो कलिंग वार पर लाइफ ऑफ अशोक टोटली चेंज जोटा कि टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ द बुद्धिज्म कन्वर्सन टू द बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वार पर तो टोटली सी बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करिवे माने अडॉप्ट करिवे एंड पाथ ऑफ वायलेंस एग्रेशन को पूरा रिनाउंस करिवे छाडी देबे सेति पे हमें कहूचे धर्म घोष धर्म घोष rather than very घोष so does not believe in war
believe in peace and love. Okay, so would become a strong supporter of non-violence, tolerance, and moral principle. So এটা আমরা, and his conversion to Buddhism has had a lasting impact on the history and culture of India. Okay, spread of Buddhism, तो Buddhism गोटे global religion हिसाब रे तमे कहि परिबो स्प्रेड करिथिले बिकॉज़ बुद्धिज्म जदि एते स्प्रेड हेछि सेथिरे कोठी ना कोठी अशोकर बहुत हाथ अछि. The Emperor Ashok's support for Buddhism had a significant role in the spread of religion, not only in Indian subcontinent, but also beyond. Some example there is about sent Buddhist the missionaries to various parts Asia ho, and helping establish Buddhism in Sri Lanka. तांको निज पुओ झियो संघमित्रा एमानकु पठेइथिले and Southeast Asia, even if as far as Afghanistan, Central Asia रे भी से स्प्रेड करथिले. A legacy of the Ashoka's rule. जदि देखिबो अशोक was one of the greatest emperor. तो तांकर regime seen as the period of relative peace and prosperity हमें कहूचे, and mark as the Mauryan pillar and edict spread moral and ethical principles. So Kalinga War and his transformation afterward are central to his historical legacy. The Kalinga War is pivotal event in the ancient history due to its cause, its extreme violence, and profound impact of the Emperor Ashok. And subsequently, our Buddhism and non-violence को spread करिछि. The war of legacy can be seen enduring the influence of Ashoka's principle and spread of Buddhism throughout Asia. तमे एटा लेखि परिबो. सर कलिंग वार रे दया नदीटा ब्लड सेट हे जाइतिला सेटा किए जानिला ब्लड सेट हे जाइतिला बोली. Okay. Sir, our data. Okay. Sir, can I I add think two ଗୋଟେ points? minute guys. I think Priyavas sir join कलेनी. तो मु जस्ट तांकू वेट करिथिले जॉइन करिया पे ठीक है. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. ओके, तो आई थिंक हिस्ट्री टा तो पूरा डिटेल ओडिशा हिस्ट्री सर डिटेल डिस्कशन करिवे. ओके, सर गोटे डाउट सर थिला. सर एबे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रे जो अशोकंकर जो तांको जो स्टैच्यू रे जो भारतर जोटा हेछि ताकू सर याकू एथरे इंक्लूड करि हबो कि ना नाही ना धर करियो तन कोठी इंक्लूड करिबा. तो तमे सेटा कहि परियो कि तांकर जो हमरो लाइन तांकर जो अशोकंकर एटा एक्चुअली अशोकंकर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें कहले लायन कैपिटल सारनाथ. तमे करेंट रे जदी लिखि परिबो सेटा मेंशन करि परिबो. ओके, तो मेजर होची तमरो पर्टिकुलरली कलिंग वार रो कॉज कोन आ तार कॉन्सिक्वेंस कोन, तो सेटा तमे मेंशन करि परिबो. Sir, consequences रे अब data point मु ऐड करियो चाहूची. हां को. Sir, he has adopted a paternalistic approach in administration and founded veterinary clinics, hospitals, and rest houses after conquering the Kalinga War. Okay, so ठीक अछि guys. मु ऑलरेडी तो मु केवल एटा कलिंग वार टा डिस्कशन करछि एंड एथिरे से गोटे एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जोटा कि जस्ट हमें टिके करछे किंतु एटा आउथरे डिटेल डिस्कशन करबा. सो कलिंग वार ऊपर हमें जस्ट होतले किंतु सार डिटेल रे करिवे पूरा जोडा का हमें करिने. तो सेटा करबा. एंड प्रियवत सर हिस्ट्री रे मु कहबे जे ओडिसा रे टॉप माने जदी मार्क जदी देखिबा 231 and 217 and प्रियवत सर ऑलरेडी रैंक 31. तमे जानि छ 2019 रो 31 रैंक रखिले. एंड मोर स्पेशलाइजेशन हमर हिस्ट्री ऑप्शनल पूरा टोटल पिला मानको को गाइड करछन्ती. तो डेफिनेटली ही इज द बेटर पर्सन जे कि हमको डिटेल रे हमको माने जदि हमें जानिया को चाहूचे ओडिशा हिस्ट्री ऊपर हो कि एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, तो सी हमको डेफिनेटली गाइड करि परिबे. ओके, यस प्रियवत हम स्टार्ट करबा. तो मैं मु तुमको एडमिन कर दोची सो दैट कि तमे सर मु से जॉइन कर छु कलिंग आईएएस हियर लॉगिन जॉइन कर. हां 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 ठीक अछि प्रिय. सो मु क्विट कर देछि सर.
समझ स्क्रीन देखा होची? हाँ सर जी सर ओके ठीक है तो स्टार्ट करिवे ओके सो मु को लाइक कम भाबुतली सो नॉर्मली लाइक इफ यू सी द क्वेश्चंस कौन डिस्कस करियार अछि एथरे तो तमरो सोमवंशी अछि भौमकार अछि राइट एंशिएंट देखु मु आगो एंशिएंट ओडिसा देन तमरो कलिंग वार अछि राइट गंगा अछि आगोण खारबेला अछि खारबेला राइट सो एडा सब एंशिएंट ओडिसा र अछि तो माने व्हाट आई विल डू इज मु टिके खाली ब्रीफली ना लाइक कारण अनम्यूट अछि म्यूट कर दियो सो ब्रीफली कोन करै ना मु टिके सीक्वेंस टा कहि देबी राइट सो दैट माने कंप्लीट फ्लो चलिबो मु स्टार्ट करी विथ दैट लाइक लिटिल बिट ब्रीफ जोड़ा मजर क्वेश्चन नहीं है ब्रीफ अबाउट दैट राइट सो दैट हल्का फुल्का बेसी नो डिटेल नो जदी तो परे मे बी सरला पर डिस्कशन जदी दरकार पड़िबो एक्स्ट्रा क्लासेस से पार्ट टा करिया पे बट आई विल जस्ट गिव सम जॉइनिंग लिंक्स देबी ओके सो स्टार्ट कर दवा ओके सर तो तुम कलिंग वार तुम कहि देले राइट तो ब्रीफली आई एम गिविंग ए ब्रीफ अबाउट द एंशिएंट ओडिसा हिस्ट्री हम केबे टू ओडिसा हिस्ट्री से जानिया पाइलु राइट व्हाट इज द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ हमर ओडिसा सो आई विल स्टार्ट विथ दैट तो समझ स्क्रीन देखा होची तो सब तो लाइक कहला स्क्रीन देखा होची राइट so our Odisha the history of Odisha starts with Kalinga War right so prior to Kalinga War we don't have any information Odisha re kon thila right Kalinga War that is our 261 BC re joda heitila right our 3rd century BC तो ता पूर्वरु कोन हेछि हमर किछि आईडिया नै राइट सो द रिटन अकाउंट ओडिसा रो अछि फ्रॉम 261 BC राइट सो ता पूर्वरु यस हमें सुनुछु कि लाइक इन सम इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल कि कलिंगा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हमर महापद्मानंद राइट ताको इन्फ्लुएंस थिला बोलिरी एंड देन आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट हेइतिला तो महापद्मानंद राइट यू नो हमर जो मगध पढिथिलो लाइक वी हैव रेड अबाउट महापद्मानंद नंदास राइट द माइटी नंदास हम पढचे राइट तो इट इज बिलीव्ड कि तमरो महापद्मानंद टाइम रे ओडिसा was under the Magadhan influence right after that tamara Dhanananda time re tamara poila Dhanananda time re Mauryan empire establish hela tetale Odisha independent he thila again Kalinga war re tamara Ashoka taku phuni Magadha under re anithile okay so this is the first Odisha bisare like ancient history bisare first eta hi ame janiya pauchu okay so एटिके ब्रीफली खाली डिस्कस कर दोची so our Kalinga war is considered as the sheet anchor of Odisha history it begins the dated history of Odisha right so this is where like we come to know about the history of Odisha the Mauryan influence over Kalinga not only added a new feather to the already crowned Magadhan imperialism but also brought about a radical change in the existing policy of the land right so as I told tamara Dhanananda time right na tamara Odisha was under the control of Magadha तापरे महापद्मानंद टाइम रे धनानंद टाइम रे पळेला पुनी अशोक टाइम रे व्हेन अशोक केम टू पावर राइट ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया तमरो ताका अंडर थिला राइट एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स लाइक तमरो कर्नाटक तळे नथिला आ तमरो कलिंग रे नथिला राइट सो कलिंग को से ए कलिंग वार परे कलिंग को एटा मगधन फोल्ड रे पळे आस्थिला राइट सो 261 बीसी रे हेतिला हमर एटा 8 years after the coronation of Ashoka our detailed account very important number 13th rock edict हमको मिली जोड़ा कि हमारा शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में अच्छे हमारा okay so this is a brief introduction इतने लंबा तो हम लिखिया दरकार नहीं एटा कितना मार्क क्वेश्चन था 10 मार्क क्वेश्चन था राइट so you can write a few lines right 1 or 2 lines is enough right just तुमको कुछ points दे देली जोड़ा तो you can use in introduction background again background जदी 10 मार्क क्वेश्चन background लिखिया दरकार नहीं right so background टा कोन थिला as I told कि तमरा बहुत लंबा टाइम रे आफ्टर महापद्म धनानंद हरै देला पर नंदास को परठारु कलिंग इंडिपेंडेंट थिला चंद्रगुप्त मौर्य तमरा ऑलमोस्ट पैन इंडिया कैप्चर कर देथिले एक्सेप्ट तमरा
Kalinga, right? So this was the background. Causes, I think you would have already discussed. Quickly, just koi dochi. Powerful neighbor, right? So you know, amara like Kautilya jo policy thila, se jo tamara amara what is that? What is the theory? What is that? सर मंडल थ्योरी Mandal theory, exactly. So तमर कहतले जो मंडल theory देथिले उसी कौन कहतले तमर immediate neighbor is always your enemy, right? So that was the belief कि भी निजर पड़ोसी रे powerful neighbor पसंद करनो थिले. Your neighbor is always your enemy because तम जदी calm down की बस पड़लो, it is quite possible कि तमर neighbor तमको attack कर दबो, right? So इटा उटा थिला सेति powerful neighbor, like they didn't want the neighbor to be powerful. तो जेहेतु तमर Kalinga was a prosperous state, economic ये भलो थिला, but powerful army थिला, right? That's why Ashoka wanted to capture it. Imperialistic design of Ashoka, as I told, like almost तमर power रे आसिले Ashok तमर whole of India तांकर control थिला Magadhan fold रे except Kalinga, right? That's why he wanted to complete the map of India. So see आकु capture करे. Economic prosperity, Kalinga was a coastal state, trade and commerce भलो थिला, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज थिला, भलो तमरो आर्ट भलो थिला, आर्टिस्ट भलो थिले, आर्ट तो इंडस्ट्री तमरो ट्रेड एंड कॉमर्स भलो थिला. तो दैट्स व्हाई सी बहुत इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेड रूट्स भी पास होतला इट, राइट? दैट्स व्हाई ही वांटेड टू कैप्चर कलिंगा. आइडा उडे किछि हिस्टोरियंस माने तमरो कोंथि लाइक देयर वाज दिस तारानाथ टिबेटन हिस्टोरियन, सी कहउथिले कि तमरो Ashoka wife ro jewels udako a Nagas, like the Nagas are the tribes of Odisha, se mane coastal tribes, right? So se mane nei thile tomaro chori kar deithile, right? That's why revenge nava pai tomaro Ashoka tangu ye karthile, right? Attack karthile. Then Karubaki ଗୋଟେ legend ଅଛି, right? कि Ashoka tomaro ଗୋଟେ fisherman ର ଝିଅ Karubaki ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, and ताकू तार बाहागर ठीक हेइतला प्रिंस सहित, तमरो कलिंगा प्रिंस सहित. तो ताकू ये करिया माने सही रागरे से तो ओडिसा को अटैक करथिले. एंड द रिलीजियस फैक्टर भी थिला, राइट? अशोक तमरो अडॉप्टेड तमरो अशोक तमरो कोन गले तमरो लाइक अशोक बिफोर द कलिंगा वार अशोक वाज ए साइवाइट, राइट? से बुद्धिज्म अडॉप्ट करन थिले. तो इट इज बिलीव्ड possible कि ओडिशा से टाइम में लैंड ऑफ बुद्धिज्म थिला, राइट? सो बिफोर अशोका देयर वाज बुद्धिज्म, तो सी थकु सेति में टॉलरेट करन थिले, राइट? सो दैट्स व्हाई सी द वार आंसे करथिले. तो दिस इज अ रिलीजियस फैक्टर. तो एडा सम ऑफ द फैक्टर्स, बट लाइक इफ यू सी किछि किछि ट्रिवियल भी अछि, राइट? किछि किछि जेन्युइन अछि, लाइक पावरफुल नेबर, यस इट वाज द पॉलिसी इन एंशिएंट हमरा एंशिएंट इंडिया रे एवले थिला, राइट? जो तमरा कौतल्य तांगर मंडल थ्योरी देइथिले, राइट? तांगर सप्तांग थ्योरी देइथिले, राइट? तांकर एवले ही सेही ये रे समस्त रूल करथिले, राइट? नोबडी वांटेड ए पावरफुल नेबर beside them, right? So this is a probable हेई पारे. Imperialistic design, yes, the those time the kings they were imperial, right? तांकर इच्छा थिला more and more expansion करिवे. So it is possible कि से चाहुथिले complete pan India tang control रहो, right? Economic prosperity भी yes is can possible reason, but हाँ एगुड़ा किछि किछि टिके trivial reason लागुची, right? से किछि historians में दे दी चंदी like those stealing of the jewels है गला कि जो Karubaki वाला जो तमरो story legend है गला, right? Religious factor भी more or less ही पारे, but then again this is uncertain because nobody knows कि हाँ सत्तर ओडिशा रे बुद्धिज्म थिला कि अशोक पूर्व not, we don't know, right? consequences कौन consequences प्रथम तो देखो it was a very devastating war. तो बहुत बेसी हमारा जो 13th rock edict रे हमारा major information we have about the Kalinga war from the 13th rock edict. तो 13th rock edict रे it has mentioned कि तमरो 1 lakh people were soldiers were killed, right? 1.5 lakh soldiers they were taken as prisoners of war, and equally 1.5 lakh soldiers they were injured as well, right? तो बहुत बेसी destruction, loss of men and material हेतला एथरे. Annexation of Kalinga independent royalani Kalinga को annex कर देले, right? तो अशोकन पूरा मगधन जो imperialism पूरा भारत वर्ष रे तमरा एडा माने expand हे थिला.
then Ashoka policy change ହେଇଗଲା, right? So now he started from like जो से बहुत cruel ଥିଲେ, right? ସେଥିରୁ ସେ ଚଣ୍ଡ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ଅଶୋକ ହେଇଗଲେ, right? ଧର୍ମ जो policy ମାନେ ତାକୁ propagate କରେଇଲେ, right? ଧର୍ମ ମାନେ like you know, right? He wanted the well-being of his people. He adopted a paternal outlook, right? ସେ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ସାରା जो moral lessons like do's and don'ts, right? का विषय खराब कहबनी, greed रखिबनी, right? तो बहुत सारा से भलिया you should respect the brahmans and shamans and donation करिवो, तो एई भलिया से लोकन बहुत ताका भितरे spiritual upliftment चाहूଥିଲେ, not only see believe करथले गोटे empire बड़ हबो not because of its wealth, right, or because of its big army. empire बड़ हबो त लोक मानक चिंता धारा broaden हबो, right? तो ताका upliftment करिया पे भी से धम्म spread करथिले, right? And even he adopted the policy of dhamma ghosha, right? Instead of beri ghosha, a juddha re beri ghosha mane kona war re conquer kariba, right? Beri ghosha se kohle beri ghosha re nai bartaman dhamma ghosha expansion habo, right? Imit na expansion habani, but expansion kimiti habo dhamma spread through habo, right? So from beri ghosha to dhamma ghosha. So do you think Ashoka mind change ହେଇଥିଲା, Ashoka ସତରେ repent କରୁଥିଲେ, right? Still he wanted expansion, right? Just the idea changed. ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଅଶୋକ ପୁରା ଦୟାଳୁ ହେଇଗଲେ, ଅଶୋକ ଦୟାଳୁ ଚାଲାକ ଥିଲେ, right? ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ମୁଁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ଲସ୍ ହଉଛି, ଏତେ ସାରା ମାରାହଣା ହଉଛି, ମୋର ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ହଉଛି, right? ତା ଜାଗା ଯଦି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତେଲେଇ ଦେବି, ଧର୍ମ ଘୋଷ କରିବି, ଭାଇ ତମମାନେ ମୋର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ, right? ତ ତାଙ୍କରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅପଲୁଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଲ କଲି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବି ହେଇଯିବ, ମୋର ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ କି ମେନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲସ୍ କିଛି ହବନି, right? So this is the policy adopted. Acceptance of Buddhism, yes, after the Kalinga War. So from a Saivite Hinduism छाड़िके से Buddhism को भी adopt करते ले, right? It is believed कि like तुम्हारा किसी Buddhist monk, right? ना हमें ठीक से जानू कि कौन थी तुम्हारा जो मोगलीपुत्र तिस्सा, कि कौन थी अशोक का जो भाई रा पुआ निग्रोध, right? तो उपगुप्त, right? Different ये but मोस्टली मोगलीपुत्र टिस्सा, राइट? कहीं ये तमरो अशोक टाइम रे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला ताको हेड करथिले, तो मोस्टली मोगलीपुत्र टिस्सा ताको जो क्रिश्चियन करथिले बुद्धिज्म अडॉप्ट करियारे, राइट? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड आउटसाइड, अशोक पुओजियो तम संगमित्र एंड महेंद्र सेमान तमरो जाइथिले दिस श्रीलंका एंड तमरो इंडोनेशिया वगैरह से पर जाइथिले तमरो, एंड अशोक जो पांचटा एम्बेसडरशिप पठेइथिले कंटेम्परेरी लाइक तमरो किंग्स, ग्रीस हेगला, सीरिया हेगला, इजिप्ट हेगला, मैसिडोनिया हेगला, सिरीन हेगला, राइट? तो पांचटा कंटेम्परेरी कंट्रीज को पठेइथिले, तो बुद्धिज्म स्प्रेड इन इंडिया एंड आउटसाइड, राइट? अशोक को वन ऑफ द रीजन बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म जैनिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम स्टार्ट हेतिला, बट बुद्धिज्म एते जो फेमस हेगला बिकॉज ऑफ किंग्स लाइक अशोक, right? Ashoka was one of the major reason Buddhism, Jainism to एते आगे बढ़ी हला, तो far and wide Ashoka time रे spread हेतिला, right? Outside India, अब फाइनली आया लगी इंडिया रो ही लोप पाई गला, right? बाहर रही गला पैटर्न एटीट्यूड, तांगरो एटीट्यूड चेंज गला, आउ से जो पूर्वरु पूरा जो your Magadhan empire and Mauryan empire is a police state, was always a police state. Police state माने कौन? Police state माने कौन? Your Mauryan empire was always a police state. What is a police state? Authoritarian state, sir. So police state is opposite of a welfare state. बुझो तो welfare state कौन करिवो? लोकंगर वेलबिंग का चिंता करिवो, लोक भलो पे काम करिवो, जदि मु टैक्स कलेक्ट करछि मु लोकंगर वेलबिंग पे किमिति मु फ्री एजुकेशन देबी, जॉब्स देबी, मेडिकल केयर देबी, ए इन सब चिंता करिवो, दैट्स योर वेलफेयर स्टेट. पुलिस स्टेट कोन खाली टैक्स कलेक्ट करिवो, राइट? लोकंग वेलबिंग डजंट मैटर, टैक्स कलेक्ट होवार अछि. सो बिफोर अशोक मौर्यन स्टेट वाज ए पुलिस स्टेट. अशोक आसिला पर इट बिकेम ए पैटर्नल स्टेट. लोक से कहिथिले, फर्स्ट रॉकेट डिक्टेट कहिथिले कोन? All men are my
like my children first operating first operating अच्छा तापरे भी तमरा कल्चरल ग्रोथ भी हेतला बिकॉज़ ऑफ द कलिंग वॉर तमरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो अशोक टाइम रे वी हैव सीन पिलर आर्किटेक्चर हे गला केव आर्किटेक्चर हे गला राइट कौन से हमरा कि ओडे कौन होचे okay so Ashok time रे तमरा this stupa architecture pillar architecture cave architecture right we have nagarjuni caves and your barabar caves in Bihar right बहुत सारा स्तूप तमरा built in Ashok time रे pillars right there were like Ashok time रे around 80,000 or something the pillars were built right lot many pillars were built तो काफी growth in architecture वगैरह भी है ही okay and special attention to Kalinga right so Kalinga को से बहुत भल पाउतले से Kalinga पे special तमरा जो bureaucracy तमरा सेटा appoint करथिले सेटा धम्म spread करिया पे सेटा take care ना पे right so he had a special regard for Kalinga right so these are the impacts of your Kalinga war Kalinga war like conclusion re we can write it was a landmark event in the history of ancient Odisha right so आज जोकु बहुत बेसी changes आस्तिला the changes were not only political तो आस्तिला Mauryan from an independent kingdom तापरे Mauryan rule आसिगला but other impact भी आस्तिला cultural देखो art and architecture spread religion change है माने Buddhism बड़ा scale तमर propagate हैला right तो बहुत बेसी the way the administration was done paternal state हे गला बहुत बढ़िया administration हे गला माने liberal administration हे गला तमरो art and culture spread हेतला तमरो right so बहुत बेसी गोटे बहुत माने कोई multi dimensional impact आसला diverse गोटे impact आस्तिला right so this is about your Kalinga war so 10 mark 15 mark कौन पड़ची depending on that तमे लिखि पारो so introduction रहिबो हम कहि दोची 2 line at least introduction रहिबो background ता दरकार नहीं unless 15 mark पढ़ला तो you can think of but not very much required right background you can skip causes so all these points will be there 5-6 points जहाँ भी अच्छी right? so there will be a this causes could a subheading रहिबो powerful neighbor right and then 2 points or 2 points like that 1-2 points 1-2 points imperialistic design 1-2 points like that you have to write right consequences if you don't get time right maybe 10 mark re time no mili pare so what you will do draw a diagram right hub and spoke kichhi bhi tama diagram karo consequences lekhibo so draw a diagram tole figure 1 annotate kar dabo figure 1 consequences of Kalinga war करगिरी बॉक्स टे कर दबो okay then conclusion B line right गोटे profound impact हेतला right गोटे landmark event ला profound impact हेतला not only in the political sphere political economic social cultural सब sphere रे गोटे impact हेतला right so this is about the Kalinga war किसी doubt एथरे कौन लिखा हबो कौन नहीं out so somebody was asking I'll tell you just good tikke mu koi do so somebody was asking कि mu current affairs point of view ta likhibi na nahi parliament building I'll tell you one thing you can write it's aswida nahi you can write a quote you can write current affairs wala jinsa but GS जो तार scope ta na ette बेसी ताकू ये करनी जीएस ला तमे सब जिंस एवरेज लिखिबो जीएस तो तुम बेसी कहबो कि मु पूरा ताकू रंगेई देबी होबनी राइट कोन हबो एंड रे तमे अलग क्वेश्चन रे आंसर लिख परिबोनी टाइम होबनी राइट सो जीएस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर यू नीड टू शोकेस तमे फ्लॉन्ट करिवो कि एते बढ़िया देखो कोट लिख दोची एते बढ़िया मु करंट अफेयर्स लिंक कर दोची करंट अफेयर्स जोट लिंक करो पॉलिटी लिंक करो
हिस्ट्री रे एज सच दरकार नै करंट अफेयर्स लिंक करबा कि एबे न्यूज रे आस्तिला अमुक हो गेला से see there is no माने end to answer you can write किछ नै राइट बट देखो तमे एक्सपर्टाइज तमे देखबो एसए रे देखबो एक्सपर्टाइज ऑप्शनल रे देखबो एक्सपर्टाइज जीएस रे एक्सपर्टाइज देखा वाला प्लेटफॉर्म नुह जीएस रे सब क्वेश्चन तमे एवरेज लिखि दो ना केते पॉइंट हलानी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स राइट so GS रे my sincere request don't overthink don't overdo plain simple vanilla बस जहाँ क्वेश्चन डिमांड से रहयार अछि क्वेश्चन डिमांड हला से कहूची कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलिंग ओवर तो मोर स्ट्रक्चर ठीक थिबो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन तमरो कॉजेस थिबो कॉन्सिक्वेंसेस थिबो दैट्स इट यू विल गेट गुड मार्क्स ताकू आउर रंगेबा मु कोटे कोट लिखि देबी मु को रॉक एडिट को कोट कर देबी पूरा एग्जैक्ट दरकार नै एग्जाम ऑप्शनल करिवो एक्सीलेंट मार्क्स पाइबो राइट जीएस रे कोनटा भाई तुम 10 रु 7 7.5 पाई थांतो चलो 8 पाई गेलो 0.5 मार्क्स राइट बट सेति की एफर्ट देला बेलू तुम अलगा क्वेश्चन जदी मिस कर देलो यू विल लूज मोर राइट सो ए गुड इंसान को की पचातला को सर मोर क्वेरी थला उठे हां को सर सर एटा स्पेसिफिकली मेंशन अछि टॉपिक ता तो कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस छाडी की आउ को क्वेश्चन आसी परियो कलिंग वर रे माने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ कलिंग वर आफ्टर अशोक इंदा किसी पचारि परिबे की एते पचारिबेन तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जदी पचारला देन ऑब्वियसली मोरियन अंडर आसला तो मोरिया वाला एडमिनिस्ट्रेशन थिबो तो मोरियन वाला दम पके दो बट इन आसीबोनी राइट because essence is calling over ऊपर ही आसीबो राइट they will not change like R to बेसी ये करिवेनी don't think much right whatever knowledge we have देखो जीएस रे it's not like a school exam की आमे जहां पढिचे बहिरु सिलेबस एग्जैक्ट सेटा आसीबो राइट we have to be clear स्कूल रे थिला हमरो जदी हमरो भलसे गोटे क्वेश्चन पढला हम न लिख पाला हम दुख लागतला मार्क कमी जिवो बट आईएएस ओएस एग्जाम रे से जिंस माइंड रो काट दियो you can never be perfect right तुम जत्ते पढ़ दियो जहां पढ़ दियो there will be some area जोडा तमरो अनकवर थिबो एंड सेमन सेटे पसी जिवे एथरो क्वेश्चन तुम देखछो भूमकर सब पढ़थिबो कि पढ़ नथिबो बट भूमकर भीतर से पसीगिरी पचारला जो क्वेश्चन कोड रे फास्ट मेंशन नैथिला nobody knows राइट गोटे क्वेश्चन पड़ता सोमवंशी रे क्वेश्चन पड़ता गोटे तांग से फाउंडर विषय रे क्वेश्चन पड़ता गोटे राइट एते भीतर पचारतला कि nobody knows राइट सो जीएस रे देयर विल बी ऑलवेज समथिंग तमो से माने बीट कर देबे बट तापे कोन करबा हमें जदी एग्जैक्ट न जानछे बे हमें जहां जानछे तो बने के लिखि देबा राइट इट्स ओके ओपीएससी रे बीटिंग अराउंड द बुश इज फाइन ओपीएससी रे इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर केबे ब्लैंक छाड़ीबनी तुम जहां जानछे लिखि देबी राइट तो इवन इफ और एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आसुनी मु जहां कॉलिंग ओवर विषय जानछी टिके टिके पैटर्नल स्टेट ए सब फीचर्स लिखि देबी आ टिके जदी जानिछि मोरियन रो ताले पुरै देबी तांगर महामत्य थिले अमत्य थिले तांगर प्रोविंशियल सेटअप रे तांगर राजकास थिले उक्तास थिले व्हाटएवर आई नो आई विल राइट राइट बट बेसी हमें ताको ओवरथिंक करियानी हां आ कोन की पचरतले डन सर मु कहउतली जे से अशोक जे स्टेटमेंट देथले सेटा ठी से पीडीएफ टा ठी तीन कोन देखि अशोक स्टेटमेंट देथिले कोन स्टेटमेंट देथिले सर मु सेटा भूली गली तो कोई नहीं अच्छा जो ऑल men are यस सर son and daughter आगे ठीक है मु पीडीएफ तने शेयर कर देबी सर आ गोटे क्वेरी थला सर जो कॉजेस रे थिला जो नागाज अटैक ऑन द ज्वेल ऑफ अशोका और गोटे लेजेंड ऑफ कारुवाकी तो सेटा हम लिखियो कि एज पर सम हिस्टोरियंस बट बिकॉज़ दोस आर नॉट स्पेसिफिक माने क्लियर कॉजेस सो इन द लिखियो कि सम हिस्टोरियंस आल्सो से दैट ना डायरेक्ट इन द लिखियो हां समझ माने जीएस कोन कहलो लाइक डोंट ट्राई टू माने राइट एग्जैक्ट इट्स ओके इवन इफ राइट the statement fine if you want to write according to some historians that is also fine right gs रे don't think कि मु exact लिखि देबी कर दे ए सब gs रे मैटर करे नहीं जमारो right do you think they have time to read a paper honestly they don't have time
ତମେ ଯାହା ଦେଖେଇବ ସେ ଦେଖିବେ। ତମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛ ଯୋଉଟା ତମେ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ଲେଖିଛ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ବାକି ଦେଖିବେନି ବି, ରାଇଟ୍? ତ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦବା ଯଦି ମାର୍କ କମ ରହିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ବେଶୀ, ରାଇଟ୍? ତ ଏତେ ଭାବନି, ଡୋଣ୍ଟ ଓଭର ଥିଙ୍କ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦଉଛ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ରାଇଟ୍? ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଲାଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିଦେବେ, ମୁଁ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ପଢି ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ବାହ ବାହ क्या नॉलेज है, राइट? ପଢିବେନି ଅଧେ ଜିନିଷ। ତମେ ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଡ୍ରଇଂ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ ଇଫ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ दैट दे विल नॉट रीड। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर ସେମାନେ ପଢିବେନି। ତମେ ଲେଖିଛ, ତମ ହିସାବରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛ, ବଟ୍ ଦେ विल नॉट रीड, राइट? पैराग्राफ रे काहे आंसर मिले, मार्क मिलेनी पैराग्राफ रे बेसी, दैट्स द रीजन। पैराग्राफ रे दे हैव टू फाइंड व्हाट इज इंपोर्टेंट। तमरा आंसर पढ़िबे 2 पेज, दे हैव टू फाइंड कोन इंपोर्टेंट, nobody will read। honestly 40 pages पढ़िबा पई it will take 40 minutes, at least 40 minutes। ये सर नो आर तार जल्दी के पढ़ परियो, 40 टा पेज पढ़े 40 मिनट लागियो ना नहीं मिनिमम। से माने 40 मिनट गोटे पेपर देबे नहीं, तांको गोटे पेपर 100 टका किछि मिले, 100 समथिंग मिले तमो हैला। तो तमर पेपर से लागो 40 मिनट बसी करिवे, ता पेपर ना टाइम में ता पेपर सरीबो ना ता पैसा ठीक से मिलिबोनी, तो से माने केबे ही पढ़िबेनी। सो हार्डली दे विल चेक ए पेपर 5 मिनट्स 7 मिनट्स एबला चक 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 उठे 5 मिनट्स 7 मिनट्स जा देखिले, तो 5 मिनट्स से तम किमित तम जणेबो, डायग्राम करिवो, अंडरलाइनिंग करिवो, बॉक्स बनेबो, राइट? सब हेडिंग बॉक्स करिवो, स्ट्रक्चर लिखिवो, दैट्स हाउ योर आंसर विल लुक अट्रैक्टिव। एंड से माने गोटे ग्लांस रे भी जानि देबे, ए प्लेयर जानि छी, राइट? इंपोर्टेंट पॉइंट हाइलाइट करछि माने हां ए कीवर्ड पाई गेले से माने, राइट? धम अशोक बेरी घोष, राइट? ए सब वर्ड पाई गेले, दे नो दैट ओके यू हैव रिटन द आंसर्स, राइट? बिकॉज़ दे विल हैव ए कीवर्ड, सो देखिबो हां ए सब लिखि छी, पिला पॉइंट लिखि छी, स्ट्रक्चर भल लिखि, चलो तब 7 दे देबी, 10 रो 7 दे देबी, राइट? सो दिस इज द थिंग। ओके, सो चलो नेक्स्ट जिबा हमें सर आ गोटे लास्ट क्वेरी सर। हां सर, ये सर जति की मेंशन अछि डायनास्टिक कलिंग वाला और भौमकर सोमवंशी सब रो मैप टा प्रैक्टिस इंक्लूड करबा की कंपलसरी, बिकॉज़ सेटा शो करी हो, तो सेट मैप टा देखि कि जीवा कि केते रीजन तंकर थला मैप रे सेटा शो करे की। I will tell what else it's good that you can do it, but not mandatory। जी सुपर स्टूडेंट अच्छा सिलेबस सरी जाइछि, तमे बहुत फ्री टाइम अछि, तम सिलेबस सर जाइछि, दे कैन डू, राइट? अदर्स इग्नोर, राइट? आई वुड हैव इग्नोर्ड, राइट? जो तमे बहुत पढ़ दैछ, तम सिलेबस सरी जाइछि, मोर सिलेबस पढ़िया को बेसी किछि बाकी नै, नाउ आई वांट टू डू वैल्यू एडिशन, राइट? मोर आ बेसिक जो पढ़ाटा जोडा दरकार परीक्षा पे पढ़ दैछि, मु बर्तन मो दरकार कि मु चाहूछि मु रैंक 1 हेबी, हैला? माने मो दरकार कि बाकी समस्या किमित मो सब आंसर डिस्टिंक्ट देखिया दरकार, से माने कर परियो, राइट? इफ यू आर इन दैट रेस डू इट, नो प्रॉब्लम, राइट? तम बाकी सब सिलेबस सर दैछि, तम सही रेस रे अछो कि मते सब आंसर रे एमिति किछि करिर अछि कि मोर बाकी सब प्लेन हटके रहइबो, यू कैन डू इट, एंड नथिंग रॉन्ग, बट मैंडेटरी नै, बाकी समस्त हैप्पीली इग्नोर कर परियो, राइट? दरकार नै। ओवरऑल देखो जोटा ब्रॉड हमें कर दवा, ब्रॉड तमरो कलिंगर मौर्यन एम्पायर, राइट? एवरीबॉडी विल नो मौर्यन ड्रॉ कर दो, एबे छोट छोट डायनास्टी भौमकर हे गेला, भौमकर रो को पार्टटा, राइट? तमरो शैलधोबर को पार्टटा, तमरो सोमवंश को पार्टटा, रे बहुत बेसी ओवरलैपिंग हे जो कंफ्यूजिंग वाला दरकार नै, समस्त पे बने। ओके सर गोटे क्वेरी थिला, ए काम करिया ना, हम टिके आउट गुड क्वेश्चन डिस्कस कर दवा, तापर एंड रे टिके आंसर राइटिंग ऊपर, बिकॉज़ आई बिलीव कंटेंट ऑलरेडी यू वुड हैव रेड, राइट? कि तो मटेरियल दे देल तुम कर दबो। सो मोर इंपोर्टेंट इज हाउ टू डू, मतलब एग्जाम रे कौन डूज एंड डोंट्स इज मोर इंपोर्टेंट, राइट? तो हम करिबा एटा, लेट मी क्विकली डिस्कस 2 मोर क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस, तला हम तापर जहां छोट छोट डाउट अछि आंसर राइटिंग ऊपर हम दाउ करना बा, हला? ओके, आउ कोन क्वेश्चन थिला? ओके, सो भौमकरस थिला एंड सोमवंशी थिला। अच्छा कहीं तापर एटा भी थिला ना, वी विल गो टू सीक्वेंस जाउ हम कलिंग ओवर गले। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जोटा हम खारबेल हमर नेक्स्ट हमर आसीबो सीक्वेंस रे, राइट? देखो, सो आफ्टर कलिंग ओवर, दैट इज योर 261 BC, राइट? तापर हमें पुणी लंबा टाइम ओडिशा विषय किसी आउ जाननु, कलिंग वार ओडिशा विषय पढ़लु हमें, तापर पुणी गोटे लंबा समय, राइट? ऑलमोस्ट आई वुड से
from 261 BC ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ first century BC ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବୁ, right? ସେ ଡେଟ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ଟା ବି ଆମେ sure ନା ହଉ. So next after Ashoka we got to know about Kalinga during the time of Kharavela. Right? Again, the time period of Kharavela is a little bit doubtful. I'm exact jannu, but mostly it is first century BC. Kichi kon second century BC भी, but mostly first century BC. Right? तो ता विषय हम next जानिया पहुंचो from हाथी गुम्फा inscription. So let's ता विषय टे पढ़ दो हमें. So this is the second big episode, we can say, right, like in the history of Odisha, ancient history of Odisha. So and our Hathi Gumpa inscription जोड़ा हमारा खारबेला करो like अच्छी. So it's a 17 line inscription, like written in Prakrit language. Brahmi is a script. Brahmi अक्षर रे alphabet वाला रे Prakrit language लिखा है जेड़ा खारबेला को द्वारा. ऐटा हमारा भुवनेश्वर हमारा जो उदयगिरी गुम्फा रे हमारा खंडगिरी उदयगिरी गुम्फा रे एटा हमारा मिली जी हाथी गुम्फा inscription. And what it contains, तारा content हला तमरा खारबेला को 13 regnal years, right? से तंग 13 वर्ष जो रूल करछनी ता विषय रे तंग लाइफ तंग अर्ली लाइफ as well, तंग अर्ली लाइफ and तंगर mainly 13 regnal years तंग 13 वर्ष रूल से कोन करथिले. तो आरो जो description लिखा है who was Kharavela? Kharavela was Chedi dynasty रो से third in lineage थिले, third in lineage of Chedi dynasty. Chedi dynasty like more MP रो dynasty, right? Madhya Pradesh रो dynasty, main the root, and तारो ये third lineage थिले. right? कौन कौन लिखा है प्रथम तंगर his career as a prince लिखा है. तो initial जो as a prince से different तमरो like जो जेमिति अलगा प्रिंस माने जो शिक्षा ग्रहण करंती, so different year he has got training, like he has got training in writing, right, that is lekha, finance, currency, that is rupa, arithmetic, that is gana, law, that is vidhi and vyavahara, right? So जो young prince जानिया दरकार apart from the military warfare to हेगला धनुर्विद्या हेगला, song and dance भी, right? Later we'll see he had a very keen interest in music as well, right? तो देखो see music training नहीं चंदी, तमरो warfare training नहीं चंदी, and different branches of administration, तमरो लेखा हेगला, तमरो finance, currency हेगला, तमरो arithmetic हेगला, तमरो व्यवहार and विधि हेगला, right? सब ऊपर से training तमरो नहीं थिले. And at the age of 24 से throne king है माने throne ने बसी थिले कलिंगर. Then तांगर 13 वर्ष रा पूरा chronologically लिखा है, right? So this was a very good attempt, right? हमारा Indians, ancient Indians, they were not known for history writing, right? So they were very माने they were criticized, right? कि ସେମାନେ बहुत खराब history लिखନ୍ତି, right? European historians बहुत criticize करते. क्या देखो तुम अलगा तुम you go to Arabic historians को देखो, तुम जति अच्छन्ति कि तुम European historians को देखो from a very early times, right? Ancient time रे भी तांगर बहुत chronology, history टा main जैसे chronology, बिना chronology रे history नहीं, right? Because without chronology you don't know, you have just some माने ओडे पवन लिखा है ची एमिति को राजा थिला आगदा मार देला, अरे केबे मारला, तुम chronology दरकार, geography भी दरकार, को जगह ए जगह रे थिला, right? तुम खाली लिखा है तो खारबेला थिला, खारबेला इंदे की मार देला, अरे कोड थिला केबे मारला, खारबेला 8 रूल करथुला, कलिंग रूल करथुला, ए फर्स्ट ए ईयर रे या करथुला, से ईयर से या करथुला. Now that will be more clear. That is how history without chronology and this geographical sense is useless, right? So देखो one of the very good account of history थिला कहया गला हम ancient India रे, जोटा कि तुम देखो chronologically में लिखी चंदी, and the geographical sense is excellent, right? North रे को तमरो state अच्छी कौन अच्छी, right? So they have mentioned south रे को states अच्छी. So that person who was written, right, he had a very good sense of the geography, right? Historical geography, same time रे कौन कौन थिला. So he had a very good knowledge of the historical geography, plus he had
chronologically mentioned कि first year कौन है था, second year कौन है था, right? So इटा गोटे जिनस मन रखिबो. So this you can mention in the answer as well, and introduction लिख परिबो. हाँ, फर्स्ट ईयर रे कौन करथिले? फर्स्ट ईयर देखो सी तमरो जो ता कैपिटल को रिपेयर करथिले, राइट? गोटे वेलफेयर अप्रोच ता देख परिबो. तो फर्स्ट ईयर रे सी तमरो कैपिटल जहां सो साइक्लोन बैक्लोन भांगी आइतला, तंगर फोर्ट हे गला, तंगर वॉल्स हे गला, ताको सब से रिपेयर करथिले. ओके, सेकंड ईयर कौन करथिले? सेकंड ईयर साउथ मारी गले एंड सतवाहन किंग सतकर्णी वन को अटैक करथिले, राइट? So result is not clear, but it is believed he was defeated, right? He was defeated and he had to come back. तो थर्ड ईयर कौन करले? जेतु सेकंड ईयर हारी गले, ठीक है, पैच वर्क करिया दरकार अछि, इज्जत खराब हे गला. सेकंड ईयर देख थर्ड ईयर आसी से फेस्टिवल गोटे मेला बनेले, मेला फला करी कि सॉन्ग डांस वगैरह से करेले. दिस इज आल्सो हिज वेलफेयर अप्रोच. गोटे वेलफेयर मेजर, रिनोवेशन भी वेलफेयर मेजर, एटा तांगर मिलिटरी एक्सपेडिशन. पुणी देख गोटे वर्ष तमर एंटरटेनमेंट बनेले, नेक्स्ट वर्ष पुणी साउथ रे मारी गले. एथर जाई देखो ए रथिकास एंड भोजिकास, राइट? ए माने अराउंड तमर महाराष्ट्र रे अछंती, नासिक रे. तो ए माने को हरे देले, राइट? देन इट इज बिलीव कि जेतले से सतवाहन हारी थिले, ए माने सतवाहन को सपोर्ट करथिले, राइट? तो ये जाई तांगर रिवेंज नेले. सो अगेन दिस इज हिज मिलिटरी एक्सपेडिशन. तापर कोन करले देखो, तांगर जो कैनल थिला, कैनल डा एटा तमर it was built by Chandragupta Maurya, a canal da, right? So possible, right? Chandragupta Maurya, somebody says ki even tomara this Mahapadmananda time में ही पारे, right? एटा डिबेट अछि, but mostly Chandragupta Maurya के टाइम में जो कैनल थिला ताको एक्सटेंड करै थिले, ओके, टिल कलिंग नगरी. तांसुले जे थिला ताको कलिंग नगरी पूरा भुवनेश्वर जाई ताको एक्सटेंड करै थिले. So this is also his welfare measure. रेमिटेंस ऑफ टैक्सेस वगैरह माफ कर देथिले, कमाई थे टैक्सेस वगैरह. अटेनमेंट ऑफ फादरहुड, एटा तांगा पर्सनल लाइफ बायोग्राफिकल अकाउंट थिला. तो सी तांगा 7th ईयर रे तांगा गोटे पुओट जन्म होइथिला. देन अगेन तमरो 8th ईयर रे सी तमरो नॉर्थ को मारी गले. नॉर्थ को जाई के देखो सी बिहार रे मगध को अटैक करचंती. बट मगध को अटैक कला बेले टिके सिचुएशन असंभाळ हिची कोन? मथुरा रे. मथुरा वाज व्हाट? मथुरा रे कौन थिला? मथुरा तमरा जैनिज्म रे हब थिला. सेही टाइम में जैनिज्म रे हब थिला. ये जैन थिले, खारबेल वाज जैन, राइट? ही वाज जैन. तो एटा जैनिज्म रे हब थिला. तो जे सेही तो फॉरेनर अटैक कला, दिस डिमिट्रियस अटैक कला, ये ताको बंचिया को आइदर इट इज डिमिट्रियस और इट इज मिनांडर, राइट? इंडो ग्रीक्स थिले माने आइदर डिमिट्रियस और मिनांडर. तो से कहउछ यवन रूलर को हरई थिले. यवन माने फॉरेनर्स को यवन कहउथिले. तो यवन रूलर को हरई थिले जाईगिरी. तो why he attacked this Barabari Nagajani hills? He wanted to avenge, right? जो तमरा अशोका तमरा कलिंगा वार रे आकु कैप्चर करथिले, ता रिवेंज नवा पई, राइट? सी जाई तमरा गोरदगिरी रे अटैक करथिले. इट इज बिलीव कि he wanted to take revenge, right? ए माने तो हरई थिले ना दिस महापद्मानंद, राइट? से तले ओडिसा को कैप्चर करथिले. सी जो जिनटा कोन ए तमरो जो परशवनाथ रो मूर्ति, राइट? ए जो तमरो जयनगर जो गुरु थांदी, राइट? तो परशवनाथ को मूर्ति ताको जिन कोन कलिंग जिन. तो कलिंग जिन को नै थिले, राइट? ताको रिकवर करिया पे से अटैक करथिले. बट एनीवेज मझरे पुनी यवन मन अटैक करले मथुरा. तो मथुरा को से पळेगी थिले. तो एटा भी तांगर मिलिटरी एक्सपेडिशन 8th रेगनल ईयर रे. 9th रेगनल ईयर रे देखो से पुनी आसी गोटे वेलफेयर वाला करचंती. सी जो सब पैसा वार बुटी नै के आस्थिले सेतरे सी गोटे कलिंग नगरी, गोटे बड़ पैलेस बनेले भुवनेश्वर कलिंग नगरी. आज भी तमे जो शिष्टपालगढ़ देखिबो सेही टाइम में सेही तमरा तार किछि रेमनेंट्स अछि, किछि तार अछि एक शिष्टपालगढ़ रे. एक तो कलिंग नगरी गोटे बड़ गोटे पैलेस टे बनेले. अगेन 10th ईयर रे देखो से पुनी नॉर्थ इंडिया को मारी गले. ओके, बट द रिजल्ट इज ऑब्स्क्योर, जणा पड़नी कोन हला. 11th ईयर रे साउथ रे मारी गले जाई के एथर तम का को हरेले? तमिल कॉन्फेडरेसी, चोलास पांड्यास एंड तमरा जो चोलास पांड्यास एंड चेरास, राइट?
तो एमानको हरेले जाइगिरी ओके एंड देन तमरा पुणी 12th ईयर रे सी तांगर स्वीट रिवेंज नै गले तमरा धूली चटेगिरी काको मगध को हरेले कलिंग जिन वापस नहीं आसिले राइट सो दिस इज हिज एटा हमर ये थिला अच्छा तब 13th ईयर रे सी तमरा केव्स बनैथिले खंडगिरी उधर जो केव्स थे केव्स बनैथिले तो 117टा केव्स बनैथिले ओके कुमार पर्वत जो तमरा उदयगिरी कुआ जाय इट वाज अ Chinese hub right not only during the time of Kharavela but it is believed ki much before Kharavela right it is believed ki tamara Mahavir eka so it visit karthile tamara Kumar Parvat Khandagiri udagare tamara Mahavir and all they have probably Mahavir and Rishabnath eman so visit karthile it was the hub of mane important place thila Jainism managara Jaina managara right tapare Kharavali vasi seଠି ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ କେଭ୍ ଫେଭ୍ ବନେଇছে okay so agona so conclusion like he was a great conqueror and empire builder so not only got a great military conqueror thile सी माने ओडिसा रो एंसेंट ओडिसा रो माने हमें कहि परिबा अनडाउटेबली सबटू बड रूलर थिले जार कि हमें नॉट ओनली ओडिसा रूलर ताकटा हमें दबदबा ताकर पैन इंडिया थिला राइट बहुत बड़ा एम्पायर थिला ओडिसा से टाइम रे बड़ा एम्पायर थिला ताकर इन्फ्लुएंस एंड ही वाज ए लीडर ताकर टाइम रे लाइक ही वाज द व्हाट यू कॉल गोटे बहुत बड़ा रूलर थिले ताकर जार कि इन्फ्लुएंस हमर पैन इंडिया जो जानू थिला राइट during this time Kalinga was at a very high stature right compared to other states Kalinga बहुत ऊपर थिला ताकर मिलिटरी देखिला हमें एई जगह मगध घर होचंती साउथ इंडियन कॉन्फ्रेंस घर होचंती this Satavahanas को होचंती Satavahana was powerful in Deccan Satavahanas को होचंती right so you can see like he was a big ruler whose influence was seen all over India ताकर मिलिटरी अचीवमेंट्स ताकर वेलफेयर ओरिएंटेड देखो ताकर कैपिटल को रिपेयर करचंती टैक्स रेमिट करचंती मझरे कितना नाच करूथिले राइट पैलेस पुलिस बनउथिले गार्डन फार्डन ये करूथिले वेल डग कैनल फैनल बनैचंती राइट तो काफी वेलफेयर ओरिएंटेड किंग थिले राइट माने इमित नथे कि पुलिस स्टेट टाइम नथिला ही लुक्ड इनटू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल तो वेलफेयर ओरिएंटेड किंग थिले बढ़िया मिलिटरी माने ओडे एडमिनिस्ट्रेटर थिले right like during his time like Kalinga was in the like one of the powerful states of India right so ए बडा हम लिखिया हम कंक्लूड कर परिबा so this is about it right तो क्वेश्चन कोन थिला एथर like whatever is there हम एतिक इंफॉर्मेशन हम बने परिया तो डायनास्टिक रेन ऑफ खारबेला माने तांकर रेगनल इयर्स ए जो लिखा हो कोन कोन अचीव करथिले and his achievement and contribution towards Odisha art and culture. Odisha art and culture कौन था करो? जैन धर्म है गला. अच्छा आउट जिनसे तो मैं मेंशन कर दूँ चीज़ art and culture है. जैन धर्म कोटे है गला. One. Second कौन? तमरो खंडगिरी उदयगिरी caves है गला. हाथी गुफा inscription है गला. Apart from that, अगर सही जो खंडगिरी उदयगिरी रे we have evidence of Odissi dance and Odissi music. So the mridanga bajauchundi lok nachund achi. So probably during his time, tamara Odissi dance also flourished. Probably this is the starting time of Odissi. Odissi is the mudra dance fans achi musical instruments achi. Right. So this points you can write. Okay. So this is about it. Any doubt? Any doubt in this? तो काको तमे आइदर ए जो ईयर वाइज लिख परिबो तांगर जो कोन करथिले और डिफरेंट हेडिंग्स लिख परिबो वेलफेयर मेजर्स गोटे हेडिंग मिलिटरी अचीवमेंट्स गोटे हेडिंग राइट कल्चरल अचीवमेंट्स गोटे हेडिंग वेलफेयर वाला गोटे हेडिंग लाइक दैट यू कैन डू ओके इट्स योर विश तमे एवला हेडिंग देकिन सब माने कॉमन कर दबो से वाला हले कोन हम तो जे क्रोनोलॉजी मन लिखे दरकार नै राइट माने मु प्रिफर करे से वाला वेटा तले ए क्वेश्चन जबे भी लिखि छी मु से वे रे लिखि छी बिकॉज़ मने क्रोनोलॉजी मन लिखे दरकार पड़े नै इन नै बाध्य रे 10th ईयर कोन करतला 9th ईयर कोन करतला परीक्षा रे भाबिया टाइम न थाए राइट तो मु त अचीवमेंट्स को ग्रुप कर दिए तो मिलिटरी अचीवमेंट्स रे जते मु तुमको भी एम बी रे लिखि दउ देखौतली राइट दैट्स व्हाई आई वाज राइट उडी गला
I was writing that कि एटा military achievement, एटा welfare achievement, एटा biographical achievement, biographical account. So you can write in that way. Military achievements रे लिख परिबो, तमरो welfare में जैसे लिख परिबो, तमरो जो this cultural achievements रे you can write Jainism, you can write Odissi dance, right? You can write about the this caves, right? You can write about the spread of Jainism, right? So this is about it. Okay, so D line introduction, D routine line introduction, body, whatever the demand of the question, body, conclusion in a positive note, right? ताको टाइम रे बहुत great achievement इतला our pan India our influence थिला military हो कि cultural हो, right? और Jainism रो ओडे golden phase थिला Jainism बहुत ओडिसा रे बहुत बड़ा भाबे establish हे थिला, right? Okay, so our question discuss karibe I will take your तमनका general queries about answer writing I will take, right? Our topic ଆମେ next କାଲି discuss करिया. Tell me. सर आपण जो कहले जो ओडिसी डांस रिवाइव करथिला सेटा तौर्य ताइक सर सेटा से बही रे लिखा है तौर्य ताइक का गोटे थर्ड ईयर रे सेटा की सर नॉर्मल लिख दे ओडिसी डांस एंड म्यूजिक ताका टाइम रे तो कौन से ताका किसी जो फोटो गुडा अछि जो क्रैक ये रे जो कार्विंग्स गुडा अछि सेतरा किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजौछन्ती मृदंग ओडिसा रे ओडिसी रे बेसी इंपोर्टेंट ला मृदंग तो से मृदंग बजौछन्ती नाचुछन्ती तो ताको बिलीव करछन्ती कि दैट इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ ओडिसी डांस एंड म्यूजिक रो स्टार्टिंग फेज सेटा बिलीव करा होछि. सर नमस्कार. हां नमस्कार. सर ये एटार किछि मटेरियल मिलियो कि सर ओडिसा ना कोठू रेफर कर पीपीटी तो देबी आ कोन रखा दो रैंक 1 तुम रैंक 1 वाला कैंडिडेट तल लागुछि ताला आ तीन सोर्स तुम कहि देबी हो हमर उत्कल यूनिवर्सिटी वाला मटेरियल ना उत्कल यूनिवर्सिटी रो मटेरियल दा भलो मटेरियल दा हमर तारा एंशिएंट ओडिसा आछी सो दैट यू कैन रेफर. सर गोटे क्वेश्चन थला. हेलो मानस दास करेक्ट मानस दास. हां को सर से जो सिलेबस रे मेंशनड अछि वर्ल्ड हिस्ट्री माने हेडिंग रे सेटा लिखा है जी बट से रिगार्डिंग तो किछि वर्ल्ड हिस्ट्री को सिलेबस लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री देखेलो मते हेडिंग रे लिखा है जी सर वर्ल्ड एंड सोसाइटी माने हेडिंग रे लिखा है जी सेटा कोथे देखेलो केमति देखेबे. हां नहीं जस्ट सेंड इन द चैट रे पठे देलो कोन सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर देलो. हां सर ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री हमरो लिखा है सिलेबस नहीं. हां सर सेटा तो नहीं बट हेडिंग रे देछि तो सेति पे डाउट होथला सेति पे पचरथले. वर्ल्ड हिस्ट्री रहया कथा एक्चुअली काहे कि यूपीएससी अछि कि यूपीएससी काहे रखिलानी आई डोंट नो यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं. बट मेंशन करिछि कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी. हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी. हां या ताले हिस्ट्री गोटे आ तो कहला इंडियन कॉपी पेस्ट कर देला इमेज सर मो लिखि टाइप कर अच्छा इमेज ट्रिक करी पके देला जाननी किंतु मु जति सिलेबस देखिल तो वर्ल्ड हिस्ट्री नथिला किंतु मो हिसाब वर्ल्ड सेटा बट पछरे थिला सर से वाला हेडिंग किंतु डिटेल ले किछ वर्ल्ड हिस्ट्री कोन देनी डिटेल देनी ना ना देनी पकेबनी दबा कथा देनी पकेबनी आई गेस खाली मेंशन करिछि हेडिंग रे सर मो चैट बॉक्स रे लिखि छि से जोटा मेंशन कर history and geography of the world. I believe na they meant geography of the world, right? History obviously laguchi पढदेले history and geography of the world दीटा बुझुची but जेटु देइनी I doubt, right? अच्छा ठीक अछि. Or do one thing na if anybody like RTI की कर दो ना सिलेबस ऊपर RTI टे मागी दियो OPSC को कि जो एई देइची नहीं I mean it I'm not joking, right? कहीं देखो दी डाइंस ऊपर RTI मागी परिबो you I am giving you a suggestion है गोटे हला एटा आगोटे जो देछि interstate relations interstate टा कोन does it contain international relations or not because UPSC syllabus international relations अच्छी तो एटा दी interstate देछि
is it purely the within India, no, our interstate, or it means international relations as well, right? ଏଇଟା ଗୋଟେ RTI ମାଗିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ RTI ଏଇଟା ମାଗିଦିଅ ତମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି of the world society କିଛି does it mean କି world geography ଅଛି, because world geography detail syllabus ଦେଇନି, UPSC ରେ ଅଛି, so does it mean କି history of the world ମାନେ ଅଛି ନା syllabus ରେ? ଏ ଦିଟା ମାଗିଦିଅ ଭଲ, ଏ ପରୀକ୍ଷା ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିବନି, ନହେଲେ ଆକୁ ପଢି ହେଇନଥିବ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପକେଇଦେଲା। ନାଇଁ RTI ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, RTI ଆସୁ ଏକ୍ସାମ ଓଭର ହବନି, ପକେଇ ଦେଖ RTI ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, RTI କୁ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି ଜମାରୁ, ଦେଇଦେବେ ସେ। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଲାଇନ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ OPSC ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତମର ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଟାସ୍କ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ RTI ଇନଫର୍ମେସନ, ତା ଭିତରେ ନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଦେବେ ମାଗିଦିଅ। सर क्वेश्चन पैटर्न ऊपर मागी पारियो कि केते मार्क रो आसीबो, माने 15 मार्क रो केनदिया 10 मार्क रो एंदा किछ मेंशन करी कि ମାନେ ସେଇଟା ତ UPSC ଭଳିଆ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ମାଗନି, ସେଇଟା ଅଯଥା ମାଗିଲେ ସିଏ ଦେବେନି। ଏଇଟା ମାଗିଦିଅ, ଯେହେତୁ ଏଟା ସିଲାବସ ରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରିଦେଇଛି, this you can ask, you can tweet as well, try tweeting as well, tweet ତମର OPSC ର ଯୋଉ ତମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କର, କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସିଲାବସ, ଏଟା କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର, ଟ୍ୱିଟ୍ କର ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ, मेल भी ट्राई करो, ट्राई कर दियो, बिकॉज यदि सरप्राइज परीक्षा आसीगला, दो डिटेल सिलेबस आसीनी, लेस चांस, बट व्हाई टू टेक ए चांस, राइट? मे बी जो गुटे तमे ट्राई करो, ट्वीट करे ट्राई करो, ट्राई सेंडिंग तमरो RTI करे ट्राई करो एप्लीकेशन, राइट? सर लैंग्वेज पेपर जो कंपलसरी पेपर नो कि सेइथरे सर ट्रांसलेशन टा भी सर मेंशन है नहीं सिलेबस रे। लैंग्वेज पेपर डिटेल लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन लिखा है, पूर्व लिखा होता लगी सर ओडिया पेपर रे लिखा है जी, किंतु इंग्लिश जोटा पेपर अछि सेथरे लिखा है नहीं। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆସିଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଯେଟା ଯେମିତି OPSC ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଆସିବ, ସେଥିରେ nothing will change, right? this language paper ଗୁଡାକରେ don't bother, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା just practice the previous year questions, ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ, nothing will change। नहीं सर ओडिया आगु जो इंग्लिश रे आस्तला बर्तन सेटा ओडिया पेपर ही आसीबो, इंग्लिश टू ओडिया, ओडिया टू इंग्लिश, ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପଢ, ସେଥିରେ ଏତେ ଭାବନି, ସେଥିରେ ବିକଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ଆସିବ, nothing will change। ଏଇ ଯୋଉ GS 1 2 3 4 ହେଲା, GS 1 2 ରୁ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଟପିକ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଡାଉଟଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ଦେଖ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବା କଥା, କାହିଁ ରହିବା କଥା, UPSC ରେ ଅଛି, ବିକଜ ଦେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାର, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ ହେଲା କି ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟ୍ ପାର ୱିଥ୍ UPSC, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ ବଢେଇଲେଣି, ବିକଜ ଦେ ୱାଣ୍ଟ କି ଆମର ଓଡିଶା ପିଲା ବି ଲାଇକ ଦେ ୟୁ ନୋ increase their level and they be at par with UPSC, so that more and more like students from Odisha they clear UPSC, right? Tankar bi top level le, that is the intention, that's the reason tomorrow prelims रे देखो question cost लगे जाउची, mains रे भी they are like aligning the syllabus with UPSC, और UPSC से align करी जो तुम IR हटाई देला, wall history हटाई देला, ताल लाभ नहीं ना, ताल align कहीं आधा खंडी align को लाभ ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से पिला ओडिशा पिला वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ नथिबे, से UPSC में एक्स्ट्रा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िया पड़ियो, IR पढ़ नथिबे ठीक से, IR UPSC में बहुत इंपोर्टेंट, तो यू कैन आस्क, राइट? ताकि परीक्षा सरप्राइज न हो, परीक्षा रे तुम सरप्राइज आसीबो, राइट? टिके डिमोटिवेटिंग लागियो, गोटे पूरा पार्ट तुम आस नथुबो, राइट? पचर दियो जेरा बडे सर ऑप्शनल पेपर रे तो 60 मार्क्स रो तो आसीबोनी 10 हां 20 आसीबो ने, ये पूरा UPSC पैटर्न हो, तो 300 मार्क नहीं ना, 60 मार्क किन आसीबो, 60 मार्क आसीबो, सेमती हेले बहुत कम पिल, जदि भी सेमती किछि आसे तो बहुत पिला ही करिवेनी से क्वेश्चन, that is okay, माने लो स्कोरिंग हो कोन, बहुत पिला करिवेन, जी मिनिमम जी UPSC कछि से करिवे, लाइक तो लो स्कोरिंग हो, सेटे बेटर करेनी, बट सर जो माने 20 यूपीएससी मार्क्स प्रिपेयर पई करथिले से तो करिवे। बहुत कम पिला, that will be very छोटो ये ना, वैसे क्लैरिफाई कर दियो ना, तुम कोच देखो you have 3 months time, तुम क्लैरिफाई कर दियो, right? Somebody like not somebody, I'll take most of you, तुम माने जे सीरियस अछो बारंबार ट्वीट करो, जतले बारंबार ट्वीट करियो they will also be माने in like ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ ନା,
बारंबार ट्वीट करछन ओपीएससी को चलो विल क्लैरिफाई राइट आरटीआई मागो यदि ट्वीट रे आगे ट्वीट ट्राई करो ट्वीट ना काम हो आरटीआई मागो सो बहुत सारा आरटीआई आसीबो सेम टॉपिक रे दे विल आल्सो कंसीडर कि हर एटा पिला कंफ्यूजन अछन लेट्स क्लैरिफाई गोटे से गोटे ऑर्डर काढी कि गोटे क्लैरिफाई कर दे वेबसाइट रे कि दिस ऑर्डर कि आ माने एटा बस क्लियर यू विल नो कि इंटरस्टेट माने इंटरस्टेट ही आ आसीबनी तम जमारू वर्ल्ड हिस्ट्री आसी आईआर आसीबनी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी द वर्ल्ड से क्लैरिफाई कर देना वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं तमरा so let them clarify ना tweet करो आगो till the time you don't get the response next phase ला RTA दिया okay सर पेपर कौन आसीबो प्लेन पेपर या रोलिंग पेपर ସେଇଟା ଛୋଟ କଥା କଣ ସେ କିଏ କହିପାରିବ we don't know ନା ଆଜି ତ ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ କରିକି ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ ତମର ଯୋଉ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଳେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ତ ସେ କରିପାରନ୍ତି we don't know ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇବା ରାଇଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ମେ ବି ନ ବି କରିପାରନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର କନସର୍ନ ଅବାଉଟ୍ କଣ ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ସିଲାବସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଟର କରେନି ସେଟା ବି ଆରଟିଆଇ କରିଦବା ସରି ଆମର ରୋଲିଂ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ सर आ गोटे क्वेश्चन जो 10 मार्क जो क्वेश्चन टा रहुची तो सेटा गोटे पेज रो दीटा साइड सेति के लिखियार अछि माने वर्ड लिमिटेशन बहुत जो रहुची प्रिसाइज देखो पूर्वरु जो क्वेश्चन आस्तो माने एबे तमरे अराउंड 7 मिनिट्स यू हैव फॉर 10 मार्कर्स यू हैव 7 मिनिट्स ହେଲା 7 मिनिट तमे एति लिख परलो तो मोस्टली 7 मिनिट रे यू विल राइट 6 मिनिट्स रे 2 पेजेस so that is enough ओके सर so it's not only how many pages it's how many you can write तम दी लिखि पारुछ जति सेति तम पय ता माने बहुत स्लो ने गोटे पेज लिखिबो but ideal hela tamara like 2 pages is ideal right for 15 markers it will be like maybe 3 pages for 10 markers 1.5 or 2 depending on choto hani bada hani 1.5 to 2 is good enough सर 20 मार्क्स में 2.5 पेजेस की मु बेसी तुम टाइमिंग ता देखि दियो तुम टाइमिंग ये कर दियो like it will be 20 markers जदी तमरो 20 markers कोदर पडियो की सर मो ऑप्शनल आउ जीएस कथा कहउथिले ऑप्शनल जीएस तो पडिबो न 20 मार्कर ना 10 और 15 पडिबो 15 पड़ियो ऑप्शनल 10 12.5 और 20 कोडा ऑप्शनल कथा सर हम कहउथिले 10 12.5 एंड 20 मार्क्स तुम सही सब तुम देखी तो तुम्हारा ऑप्शनल 250 मार्क्स राइट तो यू हैव 3 आवर्स तो तुम्हें से अनुसार तुम्हें काट दियो कि तुम्हारा लाइक हाउ मच यू कैन स्पेंड मैक्सिमम लाइक फॉर योर 20 मार्क्स राइट सो अराउंड इट विल बी सेम 250 मार्क्स माने तुम्हारा 10 मार्क 7 14 मिनिट खन हबो 14 15 मिनिट हबो 14 मिनिट यू कैन स्पेंड फॉर 20 मार्क्स तो 14 मार्क तुम 14 मिनिट तुम जति लिख परलो तो बस आ क्वेश्चन डिमांड मिठा दरकार तो जदि मोर हैंडराइटिंग स्लो अछि फॉर एग्जांपल आई विल ट्राई दिन कहली consequences तमे डायग्राम बनै परिबो राइट इफ at all in that 7 minutes मो हैंडराइटिंग एते फास्ट नो कि मु सब लिख देबी राइट सो एक्चुअली इट मेक्स सेंस कि जो माने आउट ऑफ कॉलेज सांग आछन ना तांको ठीक स्पीड थियो बिकॉज़ दे विल बी इन टच कॉलेज रो स्कूल रो पूरा कंटीन्यूअसली प्रति वर्ष लिख लिख आछन कि जे 5 वर्ष 10 वर्ष परे दउचंदी से माने प्रोबब्ली सेही स्पीड ता आनियाटी कष्ट हो राइट so you can innovate right you can draw diagrams right तो रिप्रेजेंटेशन भल लागिवो प्लस तमे माने ठीक टाइम रे भी आंसर ता पूरा फुल्ली माने सैटिस्फाई लिख परियो पूरा हेलो हेलो हां हां सर सर डायग्राम्स किछि कोन माने टिके पैटर्न्स टिके कहिबे माने सी सन मून टाइप ना और किछि जदी एक्स्ट्रा आई कैचिंग टाइप माने सिमिति तो लाइक चीजें मोर से कहि दउची बट लाइक यू कैन इनोवेट माने बहुत बेसी इन दी तो गुड द हब एंड स्पोक हेला राइट
So मझिरे गोटे गोल तमर सेतरे ये रहइबो and then so this is the common one. सिमिल तमे जो बॉक्स करी लिख परिबो राइट. सो बॉक्स करी करी पॉइंट ए देख परिबो. एई हब एंड स्पोक तमे माने डिफरेंट शेप से भी कर परिबो. आउडे तमरे डिपेंडिंग ऑन केते पॉइंट धर 6टा पॉइंट अछि हेक्सागन करी लिख देलो. पेंटागन के लिखि देलो राइट. डिपेंड 5टा पॉइंट से पेंटागन कर देलो. 4टा पॉइंट अछि गोटे रेक्टेंगल कर देलो राइट. इट डिपेंड्स. एई वाला करी लिख परिबो. ट्री ब्रांचेस each point गोटे ब्रांच रहइबो. एमिति रही परिबो गोटे बॉक्स जरा फीचर्स लिखुछ. गोटे बॉक्स रे हेडिंग रहिला ऊपर गोटे फीचर तळे गोटे फीचर ऊपर गोटे फीचर तळे गोटे फीचर. देयर इज देन तमर बाकी इमेजिनेशन अछि डिफरेंट डिफरेंट वे लिख परिबो ना. सम ऑफ माने कोन गोटे पेपर रे तम डिफरेंट डिफरेंट वे रे प्रति क्वेश्चन करथिबो ना अट्रैक्टिव लागे. गोटे सबुतरे हब एंड स्पोक बोरिंग हे जाय टिके टिके चेंज कर दो टिके एग्जाम में भल लागिवो. मार्क भल दियंते एक्चुअली तमे टिके रिप्रेजेंटेशन एवरी इनोवेटिव करला भल लागे. सर एटा हमें केबे करे जतले टाइम होनो थवा वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करिया तो ना दीटा सो लाइक द दीटा एडवांटेजेस एवरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. One, it saves your time, right? It allows you to complete the answer. तमे कम टाइम रे जहां क्वेश्चन में तमे लिखे सब लिखि दोछ राइट. सेकंड इज लाइक ब्रेक्स द मोनोटोनी. एग्जाम में चेक करछि राइट ताको मोनोटोनस लागियो ने खाली लिखिछि मसो डायग्राम भल लागियो राइट. ताको बुझिया को इजी होबो. सी बहुत कम समय में आंसर टा ग्रास्प कर दबो. गोटे लुक मारिबो पढिया दरकार जान दबो कि अरे ये कॉजेस लिखिछि चारटा एट लिखिछि साइंस से देखा जिवो राइट. सो it gives a माने गोटे रिप्रेजेंटेशन भलो ताको पढिया को इजी हुए. मोनोटोनस ब्रेक कर दिए एग्जामिनर को मोनोटोनस लागिवनी राइट. तमरो टाइम भी सेव हुए. तो मल्टीपल एडवांटेज अछि यार. सर जदि मो पाखरे 10 पॉइंट्स अछि तो 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देली आ 5 पॉइंट्स हवन स्पोक रे कर देबी एंते होबो ना 10 टा रिप्रेजेंट करी की अलगा तापरे 10 टा को एक्सप्लेन करिया अछि. VS रे I will suggest not to do repetition. डायग्राम करछो डायग्राम करछो एक्सप्लेन करछो देन यूजलेस हला. एक्चुअली कोथरे करिया था नै सिमितो बट ऑप्शनल रे ओके. समटाइम्स ऑप्शनल रे इट्स फाइन. माने एबे आ दरकार नै. पूर्व 60 मार्क्स पडतला तो बेले बेले जस्ट टू माने टिके ये करिया पे लेंदी करिया पे से कर देउथलु बट दरकार पड़ेनी. काहे तुम करियो दी थर लेखुचो भी ड्रा भी करछो पुनी तो एक्सप्लेन भी करछो दरकार नै. अब तमे कहले सीमित कर परियो लाइक योर विश लाइक पांचटा तमे लिखि देलो तापर आउ पांचटा तमे मे बी अदर फीचर्स मारे की तळे धरो पांचटा फीचर्स लिखि देलो एक्सप्लेन कर देलो बाकी पांचटा अदर सम अदर फीचर्स लिखि की तमे डायग्राम रो कर देलो चलिबो राइट. योर विश तम श्रद्धा है तमे जेमिति कर परियो. देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट इन दिस राइट. कंप्लीटली माने ताकू ही पढियो भल लागियो. सी देखला किछि लिखिछि पिला आउ पांचटा पॉइंट आछुला टाइम नथिला तो से सुंदर ग्राफ डायग्राम करी रिप्रेजेंट कर देछि. बहुत बढ़िया कि असुविधा नै राइट. डन. तो क्लास एंड करता हमें. ओके तो थैंक यू. सो व्हाट आई विल डू इज मैं जहां क्वेश्चन अछि तो क्वेश्चन कर दबा राइट. बट अरे এই সব কিছু টপিকস তোমরা ওড়িশা রে এটা তোমরা এনসিয়েন্ট মিডিয়েভাল খালি এটা আর মডার্ন র भी টপিকস এই সব টপিকস রা আছে কিছু কিছু রাইট. দে আর সম অফ द ডাইনাস্টিজ এন্ড অল. তো কিছু কিছু তো আমরা আই থিংক কোশ্চেন রে স্যার দেইছন্দি লাইক আই থিংক সোমোসিস গঙ্গা গজপতি এরা সব দেইছন্দি বোধ রাইট. আর কিছু কিছু গুলা নাই তো যদি মানে what I'll do is maybe after discussing like if you get time right ଆମେ କଣ କରିବା ओडिशा हिस्ट्री जो अब जो लेफ्ट ओवर पोर्शन रोची ताकू भी हमें डिस्कस करवा राइट.
because prelims बहुत कष्ट क्वेश्चन पड़ता ओडिसा रो तो will not take chances काहे कि बस important dynasty पढ़ी पळेबा यदि आउ गुडा unimportant पचार देला तो बेटर हमें सबुला dynasty रे देखि देखि पळेबा तार फीचर्स तो once तो मॉक टेस्ट चालू माने एडा हैला परे ओडिसा हिस्ट्री ओडे आउट टिके जो लेफ्ट ओवर मॉड्यूल्स ओडे क्लास में जिवा ओके एंड सिमिलरली आर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन हां हां सर डॉक्यूमेंटेशन टा सर शेयर कर दे हम सरला पर करिवि ओके सर थैंक काहे एडा ना मोर प्रॉब्लम इज दैट एडा मोर पूरा ancient medieval सब टॉपिक्स अछि आर्ट एंड कल्चर सब टॉपिक्स अछि राइट तो मु बेटर क्लास नै सरला पर करिवि एडा शेयर करिवि सिंस आर्ट कल्चर भी मोर सब टॉपिक्स अछि लाइक आई हैव मोर देन लाइक अराउंड 300 स्लाइड्स कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया तो सेति पे मु पूराटा नो जोटा नेबी मु सेटा कर देबी सेटा सरला पर ओके थैंक यू ओके तो चलो थैंक यू Thank you, sir. Good night, sir. Thank you very much. Thank you, sir.